subject English grammar. In last lecture we were completed chapter 4 capital letters and full stop. Now today I am explaining chapter 5 comma. So first of all I am explaining about comma with examples. So now let's see. Read this sentence. Here I have written one example by using comma. So let's say I read this example. Rohan went to the grocery store. रोहन ग्रोसरी स्टोर में जा रहा है. ग्रोसरी स्टोर मीन्स जहाँ पे जो फूड आइटम्स मिलती है उसे कहते हैं ग्रोसरी स्टोर. वहाँ पे रोहन जा रहा है. He bought. बाय का पास्ट फॉर्म है bought. बाय मीन्स खरीदना. So he bought tomatoes, potatoes, butter, milk and eggs. So वो क्या खरीदता है ग्रोसरी स्टोर में से? टोमेटोज, पोटेटोज, बटर, मिल्क एंड एग्स. तो यहाँ पे हमें टोमेटोज, पोटेटोज, बटर उन सबको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करना है. सो हियर आई पुट कोमा आफ्टर द वर्ड टोमेटोज. हियर आई पुट कोमा आफ्टर द वर्ड पोटेटोज. हियर आई पुट कोमा आफ्टर द वर्ड बटर, milk and eggs. But you have to keep in your mind. But you have to keep in your mind. We do not put comma before and. And के पहले हमें comma का यूज नहीं करना है. तो हमने यहाँ पे comma क्यों यूज किया? क्योंकि we have to separate the names of things. यहाँ पे things के names दिए हैं, उनको separate करने के लिए हमने comma यूज किया है. देखिए टोमेटोज एंड पोटेटोज के बीच में कोमा यूज किया, पोटेटोज एंड बटर के बीच में कोमा यूज किया, बटर एंड मिल्क के बीच में कोमा यूज किया. तो लाइक दिस यू हैव टू यूज कोमा इन द सेंटेंस. We see that commas are used to separate the names of things that Rohan has bought from the grocery store. Now let us read some more examples. तो चलो हम देखते हैं examples. Now let's see the example number 1. Hema, Varun, Shalu and Joy are absent. तो यहाँ पे names of students are given. Okay, so that names of students we have to separate them. For that we have to put comma. So here commas are used to separate the names of the students who are absent. जो students absent है उनको separate करने के लिए हमें comma का यूज करना है. Look at here. मैंने ये वरुण एंड हेमा को सेपरेट करने के लिए उन दोनों स्टूडेंट्स के नेम के बीच में मैंने कोमा यूज किया. यहाँ पे मैंने शालू एंड वरुण के बीच में मैंने कोमा यूज किया. शालू एंड जय इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड दिया है? एंड. यू हैव टू कीप इन योर माइंड वी डू नॉट पुट अ कोमा बिफोर एंड. एंड के पहले हमें कोमा यूज नहीं करना है. सो सेम वे you have to put comma to separate the names of the students who are absent. इसी तरह आप यहाँ पे comma यूज कर सकते हो कोई भी सेंटेंस में. ठीक है? Now let's see the definition of comma. When there are more than two similar words in a sentence. अगर जब भी सेंटेंस में दो वर्ड्स से ज्यादा वर्ड्स दिए हैं सिमिलर वर्ड्स, दो वर्ड्स से ज्यादा सिमिलर वर्ड्स दिए हैं सेंटेंस में, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करेंगे. ठीक है? वी पुट कोमास टू सेपरेट देम. हम उसको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करेंगे. ठीक है? नाउ अगेन आई रिपीट. When there are more than two similar words in a sentence, we put commas to separate them. Now, let's see exercise A. Now, I read the instruction of exercise A and I'll explain what we have to do in this
exercise. I read the instruction of exercise A. What commas where you think they are needed? यहाँ पे हमें कोमा पुट अप करना है. Where you think, आपको सोचना है. They are needed, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे आपको सोच के कोमा का यूज करना है. So here I have written 6 sentences and let's see one by one where we use comma in a sentence. Let's see sentence number 1. My mother is beautiful, intelligent and a good cook. यहाँ पे mother beautiful भी है, intelligent भी है and a good cook. Now, so where we use put comma? Yes. Here similar words are given: beautiful, intelligent and a good cook. So where we use comma? After the word beautiful, we put comma. You have to keep in your mind, we do not put comma before and. Okay, and के पहले हमें comma put up नहीं करना है. So my mother is beautiful, comma, intelligent and a good cook. Now let's see sentence number 2. Diya, Pia, Sonia and Meena are playing in the garden. So here all the names of girls are given. That names of girls we have to separate them. Where we have to put comma to all names of girls. We put comma. So here after Diya we put comma, after Pia we put comma. And keep in your mind, we do not put a comma before and. And के पहले हम comma put नहीं करेंगे. And Meena are playing in the garden. तो यहाँ पे सारी गर्ल्स हैं वो गार्डन में खेल रही है. तो यहाँ पे नेम्स ऑफ गर्ल्स को हमने सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया. कहाँ पे किया? आफ्टर द वर्ड दिया we put comma, after the word diya we put comma, after the word Pia we put comma. Sonia and Meena are playing in the garden. Now let's see exercise 3. I can play cricket, football, badminton and hockey. So मैं क्या खेल सकती हूँ? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड हॉकी. यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स क्या है? नेम्स ऑफ गेम्स. सो वी हैव टू पुट comma to separate all names of games. So let's see where we put comma. I can play cricket, comma, football, comma, badminton and hockey. So you have to keep in your mind, we don't put a comma before and. यहाँ पे and के पहले हम comma put नहीं करेंगे. So in this sentence where we put comma, I can play cricket, comma, football, comma, badminton and hockey. So now next, number 4. For lunch, I stop for a while. So means we have to put comma after the word for lunch. I want rice, cakes, vegetable, curry and dessert. Okay? So lunch में क्या है? I want. लंच में क्या चाहिए उसको? I want rice, cakes, vegetable, curry and dessert. यहाँ पे लंच में जो चाहिए उसके नेम्स दिए हैं. ठीक है? So
rice, comma, cakes, comma, vegetable, comma, curry and dessert. So you have to keep in your mind where we put comma. Yes. After the word rice, after the word cakes, after the word vegetable. But after the curry, we do not put comma. You have to keep in your mind. We do not put comma before and. हमें and के पहले comma use नहीं करना है. So in this sentence, first I put comma after two words for lunch. Comma, I want rice, comma, cakes, comma, vegetable, comma, curry and dessert. Now, let's see sentence number 5. My father has visited France, England and Japan. Here, names of countries are given. We have put comma to separate all names of countries. Yes, let's start. We put comma after word France. And we do not put a comma before and. And Japan. लेकिन and के पहले हमें comma use नहीं करना है. So let's see. My father has visited France, comma, England and Japan. तो यहाँ पे similar words कौन से हैं? France, England and Japan. यहाँ पे France, England को separate करने के लिए हमने comma use किया है. So between France and England we put comma. England and Japan. Already we have written here and. You have to keep in your mind. We do not put a comma before and. And के पहले हमें comma use नहीं करना है. Now next number 6. Payal, Rinita, Joy and Jeet are participating in the race. Look at here. Names of students are given. Similar words. Names of students are given. So we have to separate them. We have to put comma to separate them. So after the word Payal, we put comma. After the word Rinita, we put comma. And you have to keep in your mind. जहाँ पे end आए वहाँ पे हमें stop हो जाना है. क्यों? क्योंकि we do not put a comma before and. And के पहले हमें comma use नहीं करना है. And के पहले हमें comma use नहीं करना है. So Payal, comma, Rinita, comma, Joy and Jeet are participating in the race. तो ये सब ने रेस में पार्टिसिपेट किया है. तो यहाँ पे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने कोमा यूज किया है. यहाँ पे हमने पायल, रिनिता उन दोनों के बीच में कोमा यूज किया क्योंकि उन दोनों वर्ड को हमें सेपरेट करना है. यहाँ पे हमने रिनिता, जय उन दोनों वर्ड को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज किया है. यू हैव टू कीप इन योर माइंड अगेन. I'll tell you, we do not put a comma before and. So like this you have to use comma. Now I'll remind you the definition of comma. When there are more than two similar words in a sentence, we put commas to separate them. I repeat again. When there are more than two similar words in a sentence, we put commas to separate them. So here exercise A completed.
આભાર.